So, a very good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Once again, welcome to this interesting session on higher education opportunities in Germany, where tonight we will be talking about everything relevant to TU9 universities, technical universities, the TU9 consortium of Germany, which I think is one of those prestigious group of institutes which a lot of you look forward to join and figure out various ways your profile is the most suited to join these particular universities. My name is Sumit Rai. Uh, I'm your host for the next 60 to 90 minutes, where I have planned an interesting session covering a lot of topics relevant to TU9 universities, and also would be covering a lot on your profile evaluation as well. So keep your question and answers coming while we continue the session. I will officially open the session in about 3 minutes from now. Just waiting for a few more people to jump in, and then we go live into this interesting session on TU9 universities in Germany. Stay tuned for the next couple of minutes, please. So another minute before I open it officially. Just wanted to check if I am audible, if I am loud and clear. If you all can see me, view my screen, just give me a thumbs up. Just give me a reaction that it's everything all right technically, so that we don't find any disturbances in between. Okay, excellent. So you all can see me and hear me well. That's good. So let's just start. Let's not wait for more, because I know your evening time is precious as Diwali week. So I would like to start early without making you more wait. So ladies and gentlemen, boys and girls, once again, welcome to this official session on technical universities in Germany. My name is Sumit Rai, and I will be your host for the next 90 minutes, covering the following topics tonight. What are TU9 universities? Why we should aim for TU9 universities? What are the possible specializations? Because every TU9 is famous for some particular specialization. So what are those specializations you want to look at? Then how can you possibly build your profile to get into these TU9 universities? What are the common mistakes people make while applications? And we will also cover some part-time career opportunities as well during these next 60 odd minutes. Okay. I just wanted to share a small story.
Let's just quickly hear this. A young dreamer with boundless ambitions yearned for more. One fateful day, his dreams took flight as he embarked on an MBA journey at Hochschule Offenburg in Germany, graduating in 2006. Amongst his peers, 16 nationalities intermingled, forging friendships that spanned the globe. It was an experience of a lifetime, a decision made 2 decades ago that has definitely yielded handsome rewards. Do you know this man? Right, this is a small story which was written down almost 20 years back, and it was none other than myself. This was me 20 years back, decided to embark on an MBA journey in Germany, class of 2006. Yes, I took this decision long back at a time, at an era where Germany was primarily known for engineers and PhD people. Not many people would talk about that you actually can go for an MBA program in Germany, which I did 20 years back. And ladies and gentlemen, I did this in English language too. That's my journey. Started in 2004-5, followed it up with an MBA from a public university in Germany, then worked for certain German companies until 2007, and then came to India with a couple of these companies, working full-time in India for them. Also had a great experience working for a university called Frankfurt School of Finance and Management for almost 10 years, until started my EUGateway in late 2016. And since then, I've been involved in every activity to build EUGateway from pillar to pillar and to bring it to the next level, and sit in front of you like this every week and talk about my experiences and learning in Germany, and how you can take advantage of my experience, my knowledge, so that more and more students become knowledgeable and take the right steps. And that's a small story about me. Professionally, now more than 15 years of experience in higher education management, recruitment, consulting. Also have a lot of entrepreneur experience in startups in food and beverage and food tech, and very recently completed my product management certification from ISB Hyderabad. Also have a international career coaching certificate from UCLA. That's in short about me, and one of the prime reason why I sit in front of you tonight to talk about your education adventure in Germany, the one which I had like almost 20 years back. Maybe something like this you would also have when you embark on your journey to come to Germany for your studies. As always, I announce these bonuses at the very end of the session. It's not different tonight. You would be awarded these bonuses if you stay till the very end, and there are 3 to 4 bonuses which I always announce, and you definitely can be can take these bonuses as a part of your commitment for the next 60 minutes tonight. The key takeaways for you is you would be more knowledgeable, more let's say informative about the TU9 universities in Germany, and you would also be able to make which TU9 your profile would be best fit based on your career orientation, based on your goal clarity. Those are the 2 key takeaways, of course, apart from different bonuses and discounts, which we always announce at the end of the session on our services. That would also be for the taking tonight. A bit on social media. If you are still not connected, then I will ask my team member. I have been joined tonight with Dhananjay, our German counselor, German higher education expert. Also with me is Alpna, who is an international advisor on various countries. And they would just put in the link in the chat box for you to follow us on all these channels. And we'll just take a minute to let you follow us
join us, subscribe us along these channels. And once you done it, just put a message in the chat box. If you have joined us 1, put D1. If you join 2, put D2. If you join and subscribe to all 6, put D6. And the one who does the D6, of course, is in for a special bonus tonight from my side. So make sure you do this, and I just take a quick pause of a minute. Also, so I did not ask you, is English is an okay language for you, or should I modulate, also speak in Hindi, because these are the two known languages to me. I can communicate very well. German as well, but German, my communication is limited. But in case you want me to speak in German, I can do that. So let me know if English is totally all right, or you want me to speak in Hindi too. ठीक है, I think कुछ लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में भी बात करूं, तो I will just mix it between Hindi and English so that everybody has an ease of understanding. तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया चैनल्स, ये जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इसमें रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं रिगार्डिंग हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, नॉट ओनली इन जर्मनी बट अक्रॉस द ग्लोब. और बहुत सारे जो क्विक अपडेट्स कंट्रीज वाइज आते हैं वो भी रेगुलरली इसमें हम पोस्ट करते हैं, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट on any of those key information in case you are deciding to move ahead with your education abroad journey. तो प्लीज फॉलो कीजिए, जो फेसबुक ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पे हमको फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. That would all help us. There's a regular posting across these. Last 1 minute, and then I will move on to. ठीक है, काफी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदी में बात करने के लिए. मैं हिंदी में बात करूंगा, लेकिन मैं इंग्लिश भी रखता हूं, क्योंकि इवेंचुअली आप जब जर्मनी जा रहे हैं पढ़ने, तो आपको इंग्लिश एज अ क्राइटेरिया लगने वाला है. तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी में आपको एटलीस्ट समझाने तक ले जा सकूं, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपको इंग्लिश के लैंग्वेज टेस्ट लेने पड़ेंगे, इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी अगर आपको एडमिशन चाहिए है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर दैट मैटर. Okay, I hope you people have subscribed. Let's see, I haven't seen any D1, D2, D3, D4, D5. So none of you have subscribed or joined the group as yet. If you have done, just put it in the chat box. दूसरी बात, आपको जो भी अभी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, आपको जो भी क्वेरी है, आप वो क्वेश्चंस Q&A सेक्शन में डालना शुरू कीजिए. मेरे टीम मेंबर्स साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, धनंजय एंड अल्पना, and they both are expert in higher education domain, Germany and elsewhere. तो आप क्वेश्चंस अपने पुट करना शुरू कीजिए. They will answer to the best of their knowledge. और मीन टाइम में सेशन के बीच में भी मैं आंसर करूंगा, जो भी क्वेश्चंस अनआंसर रहेंगे मैं भी उनको आंसर करूंगा, उनको एड्रेस करूंगा आपके लिए. बट meanwhile, just continue to put your questions so that everything gets adequately covered, and something for which you are in here tonight, that also gets covered. Okay, now let's move on. Thank you so much, whoever has subscribed to this. I'm happy to see D6, most of them are doing it. I hope you have seriously done it, क्योंकि मेरी टीम ये बैक एंड में चेक करती है, जिसका D6 आ रहा है उसने एक्चुअली सारे चैनल्स को फॉलो किया है कि नहीं. अगर आपने फॉलो किया होगा तो ही आपको वो मैं एक स्पेशल बोनस जो मैंने बात करी है वो मैं आपको दूंगा. Okay. So what are TU9 universities? Everybody talks quite a lot about TU9. अगर वहां मिल जाए तो बेस्ट है, लाइफ अच्छी है एंड ऑल दैट. आपको सिंपल समझाने के लिए मैं बता देता हूँ. आईटीज ऑफ इंडिया, मतलब आईटीज में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है एंटर करने का. वो बहुत सारे
IITs भी नहीं है हमारे पास, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है किसी भी IIT को क्रैक करने का। इसको आप सिमिलर लाइंस में ले सकते हैं, जो हमारे टॉप इंडियन IITs हैं, लाइक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, 7-8 जो टॉप IITs है ना, इन सब को आप ये हमारे TU9 से कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स द लेवल ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज led by research and application is what we talk about this group of TU9 universities. तो इसीलिए ये बहुत स्पेशल हो जाती हैं, इसीलिए बहुत डिमांड में हो जाती हैं कि अगर मेरा TU9 में एडमिट होता है, so I am ready to go at any length, क्योंकि it's as good as you know IITs इन इंडिया। अब IIT इन इंडिया में एंटर करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारा ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। बेसिकली IIT JEE के जो आपके एग्जाम्स हैं वो क्लियर करने पड़ते हैं। इट्स नॉट इजी एज यू नो टू क्रैक दीज एग्जाम्स, और कुछ भी छोटे से नंबर से आप रह गए, परसेंटाइल से रह गए, तो आपका पूरा साल चला जाता है। तो वो कंपटीशन बहुत हद तक सबसाइड हो जाता है अगर आप TU9 की बात करें। लेकिन as I said, they are at par with IITs, so it's not easy to get into TU9 यूनिवर्सिटी। एक बहुत ही रॉक सॉलिड प्रोफाइल की जरूरत होती है और बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से एप्लीकेशन करना पड़ता है अगर आपको ये TU9 यूनिवर्सिटीज क्रैक करनी है। So that's what I'm going to cover. For your common understanding, it's very clear. These are research as well as applied sciences, technical universities of Germany, which are at par with IITs of India. Why you should go to TU9 universities? मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको, लेकिन the question still remains. Why you should go to TU9 universities, right? Couple of points here. They are the top ranked German universities. Excellent reputation in research, in startup, in innovation, in technical know-how. Best in class partners, university partners outside Germany. And they are also among the top 200 QS world ranking universities worldwide. These are at least a couple of those factors which are enticing enough for you to think through that, yes, these are the places. If you are really from an engineering background, or if you're looking something relevant to engineering or management studies, then for sure, I think TU9 should be your first preference, provided whether this could be your preference, whether you can make it, is what we're going to cover in the next slides. Which are these TU9 universities? In short, I think we talk about 9 universities, and these are the names. You can take a screenshot if you are yet not aware of these TU9 universities. Take a screenshot. These are those top technical universities of Germany we are talking about, a part of TU9. RWTH Aachen, Technical University of Berlin, TU Braunschweig, TU Darmstadt, Technical University of Dresden, Leibniz University Hanover, Karlsruhe Institute of Technology, Technical University of Munich, and University of Stuttgart. For your understanding, our student studies across these universities. Over the last several years, we have got them admit to many of these technical universities, many of these TU9, and this could be your chance now, if you need a support and assistance, to come and join hands with EUGateway to take assistance on your application and your entire process to get an admit into any of these universities. Now we'll cover in short, what are these universities famous for, right? Probably you have heard of these names, you have understood, but then ये स्पेशल टॉपिक क्या पढ़ाते हैं जिसके लिए मुझे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए? That's what I tried to cover in these next 9 slides with respect to these TU9 universities. RWTH Aachen is one of those leading TU9 universities offering programs in management and engineering, industrial sciences, data science, automotive, transportation, robotics, production system engineering. Now, RWTH Aachen has also set up an RWTH International University, where they charge tuition fees to all the non-EU students. That means students coming from India or China or South Asia are liable to pay tuition fees ranging from 20 to 30,000 euros for these particular programs.
Some of these programs are also available at RWTH University, and you could still study for free, but it depends. And it's what my understanding now says, that most of these programs have now been moved to international university because of the sheer interest at this university and the number of the applications they receive. So they have created this international university under RWTH Aachen, and they've started charging tuition fees. My questions to all of you, and the questions which I keep on facing during my consulting sessions every day, कि अगर फीस देनी है तो जर्मनी क्यों जाना है? अरे भाई, अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो किसी भी जगह जाओगे, पैसे तो जमा करोगे ना, फीस तो कहीं भी दोगे। कोई वैसी कंट्री नहीं है जो आपको फ्री में पढ़ाई रही हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी आप कंट्री की बात कीजिए, देयर आर नो फ्री ट्यूशन, फ्री एजुकेशन अवेलेबल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप, क्योंकि जर्मनी में फ्री है, उसको आप जो ट्यूशन चार्ज करते हैं उससे कंपेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि इट डज नॉट स्टैंड अ कंपैरिजन। जर्मनी ट्रेडिशनली ट्यूशन फ्री रही है क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट ये सारी यूनिवर्सिटीज को फंड्स प्रोवाइड करती है, ये सपोर्ट करती है, क्योंकि जो एजुकेशन है जर्मनी की, इट्स स्टिल नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड, इट्स स्टिल नॉट मनी मेकिंग। अगर मैं आपसे बोलूं कि जर्मनी में 400 से 500 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके कंपैरिजन में ओनली देयर आर 35-40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन इसीलिए आता है क्योंकि वो उनको गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलते और वो अपनी ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं वो खराब हो, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ आप जाते हो कि नहीं, ट्यूशन फीस जो चार्ज करता है वहां नहीं जाना, तो उसके बाद तो उसके हिसाब से तो फिर ये RWTH आखिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बेकार है, क्योंकि अब वो ट्यूशन फीस चार्ज कर रही है। और ऐसा सिर्फ ये RWTH आखिर नहीं कर रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में, बहुत सारी TU9 यूनिवर्सिटीज हैं जो अब ये ट्यूशन फीस चार्ज कर रही हैं अंडर देयर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, एंड स्पेशली चार्जिंग नॉन EU स्टूडेंट्स। आप सिलेक्टिव हो सकते हैं, आप कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहां आपको फीस नहीं लगेगी, फाइन, आप कर सकते हैं अप्लाई, पॉसिबल है। लेकिन लार्जली अभी वो सारी एप्लीकेशंस ये इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में पुश हो जाती हैं और फिर आपको ऑफर भी आता है, लेकिन वहाँ ट्यूशन फीस है। मैं कहता हूँ एज अ काउंसलर विद मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको इन किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफर आता है, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए विदाउट विदाउट सेइंग कि फीस चार्ज कर रहे हैं, नहीं जाना। इससे डबल फीस आप किसी और कंट्री में जाएंगे वहां पे करेंगे, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको जो जर्मनी में मिलेगी ना, उसकी 1/3 हो सकता हो आपको दूसरी कंट्रीज में मिली और पैसे ज्यादा लगे। So do not bring money as the criteria to select your program and university in Germany. Regardless of public and private, what matters is the quality of education, the seal of Germany, the seal of German education. You know, education made in Germany is what matters, and regardless of public and private universities. क्योंकि वो वहां तक पहुंचने से पहले काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उसके बाद ही वहां तक पहुंचते हैं। आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि जर्मनी में स्टूडेंट्स आर ड्यूप्ड बाय सम XYZ of frivolous university, and now the government is planning to send those students back to their hometown, क्योंकि उनको गलत ऑफर्स आए थे, गलत यूनिवर्सिटी थी, गलत एजेंट ने कुछ बेच दिया और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने ये आज तक नहीं सुना होगा जर्मन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये आपने कनाडा के लिए भी सुना होगा, या आपने यूके के लिए भी सुना होगा, या आपने यूएस के लिए भी सुना होगा, जहां आप बहुत खुशी से पैसे देके जाना चाहते हो, लेकिन क्या वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो यूनिवर्सिटी आपको एट टाइम्स मिलती है? इज द क्वेश्चन मार्क। क्या आप सही रास्ते पहुंच पाते हो? इज द क्वेश्चन मार्क। मेरा तो क्वेश्चन सिंपल सा वो गवर्नमेंट के लिए ये है कि इन द फर्स्ट प्लेस वो यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश कैसे हुई जब वो फ्रॉड है, और यहाँ की एजेंट्स जो, और वो यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड करते हैं, उनको वहां भेज देते हैं, पैसे लेते हैं यहाँ से, उनको वहां भेज देते हैं, उसके बाद दे आर ऑल स्ट्रैंडेड एंड बीन डिपोर्टेड बैक। कितने सारे केसेस ये लगातार हमको सुनने में आते हैं। सो प्लीज वंस अगेन, चॉइस आपको बनानी है, लेकिन पैसे को फैक्टर मत बनाइए, क्योंकि आज की डेट में पैसा अवेलेबल है बाय वेरियस बैंक्स इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन, तो वो आराम से अवेलेबल है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप बिल्कुल दीजिए, और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसको आप बिल्कुल परस्यू कीजिए। सो दैट्स अ बिट मोर ऑन दिस साइड, जो मैं आपको एज अ टिप बताना चाहता था।
तो RWTH Aachen is one. Second is TU Berlin. Now TU Berlin में सस्टेनेबल मैनेजमेंट MBA प्रोग्राम जो लिखा हुआ है इसमें ट्यूशन फीस लगती है. GP ग्लोबल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, 16,000 यूरोस ट्यूशन फीस लगती है. और कुछ और ऐसे प्रोग्राम है जो TU बर्लिन में जो ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि TU बर्लिन अब खराब हो गई. They are at that level and they can charge tuition fees, have started to charge tuition fees, and you should be prepared अगर इसमें कहीं admission मिलता है that you are ready to pay tuition fees. As simple as that. TU Braunschweig is pretty much famous for computer science and engineering program. Still no tuition fees charged, no international department charging tuition fees at TU Braunschweig. TU Darmstadt, same, no tuition fees charged. But you can come for these very advanced level of studies, cognitive science, distributed softwares, tropical hydrology, environment engineering, and mathematics. TU Dresden is again remains a tuition-free university with more than 25 English-taught master's programs in the offering, and some of them are excellent programs. Few of them we have promoted over the last couple of years at TU Dresden itself. So yes, there's an excellent possibilities that you can study at these universities, especially let's say TU Dresden, with no tuition fees. Leipzig University, Hanover. Again, horticulture, computational methods, financial engineering, water resource management, economics and management. Like this, there are many programs being offered even at this prestigious university in Hanover. KIT is pretty famous, known to many, many more people in India and globally, and many students have passed out. I have personally been to KIT, excellent campus, and you actually can make a good future and good fortune if you pass out from Karlsruhe Institute of Technology. Now, Karlsruhe Institute of Technology has set up Karls Hochschule Institute of Technology, Karls Hochschule International Institute or something like this, under which they have constituted certain master's program entirely taught in English, and for which you will now pay tuition fees. And this has been charged since last 4 or 5 years. TU Munich, the number one university in Germany and number one TU9 university in Germany, where people just line up to get an admit. Excellent place among the top 40 universities globally, number one in Germany, and you can study whatnot. Everything is possible, but very critical requirement at TU Munich now are excellent grades. Your GMAT, GRE, or GATE requirement has been made mandatory since last 2-3 years, especially for students from India, and I think from China too. But India definitely yes. So you can't get a pass if you do not have GMAT, GRE, or GATE exam as one of the parameter in your application. And you can study many things at TU Munich. Some of them has been mentioned here: software engineering, management and IT, aerospace, management and technology, many things. One of those primary choice, if you want to come to Germany, keep TU Munich as a part of your top list. University of Stuttgart. Again, a lot of programs relevant to civil and structural engineering. Excellent place to study, and Stuttgart is a place of Mercedes. That's where the Mercedes comes from, Stuttgart. So one of those people who study there can be looking forward to do the internship at Mercedes-Benz. Also, Stuttgart is full of IT people, and a lot of Indians live in Stuttgart. So you will not feel homesick. Now, question comes, how to get into these TU9 universities? I'm taking a quick pause here and just to check if your questions have been answered. The many has been asked, and I see many of them has been answered. Put in more questions. Put in more questions. Happy to just quickly address for the next 5 minutes. क्योंकि अब जो स्लाइड है वो आपके प्रोफाइल से रिलेवेंट है. तो अगर आपके पास प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज स्टार्ट पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स.
TU Hamburg is not a part of TU9. It's University of Hamburg or other. Tarun complete at least 2 level of German language, A2. इंद्रजीत, आपके 5 बैकलॉग्स हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, आप अगर ये SGP और CGP में 78% मेंटेन करते हैं, there's still a chance that some of these TU9s would offer you a choice of study in English. Yes. So Mihir, इट डिपेंड्स आपने बैचलर्स में क्या किया था और आप मास्टर्स किस चीज के लिए करने जा रहे थे, तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका स्कोर है, इट इज, आई वुडंट से इट्स एन एक्सीलेंट टू गेट इनटू TU9। जर्मन एक्सपीरियंस भी जस्ट अ लेवल है, वर्क एक्सपीरियंस भी लेवल है। one of those reasons why you were not able to get into any of the TU9s, because जो TU9 में एंट्रेंस का कंपटीशन है वो बहुत टफ है। एज आई जस्ट सेड, वो IITs के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप बेस लेवल के मार्क्स लेके जाते हैं, ये आपका जो प्रोफाइल आपने मुझे बताया, ये बेस लेवल प्रोफाइल है। तो अगर आप बेस लेवल प्रोफाइल लेके जा रहे हैं और उसमें काफी और चीज एडेड नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी किसी भी TU9 से एडमिट लाने की। सो गार्वित, फॉर जर्मन लैंग्वेज स्टूडेंट कोलेग के लिए आपको मिनिमम B2 लेवल तो चाहिए। कुछ स्टूडेंट कोलेग C1 भी मांगते हैं, लेकिन आप B2 तक जाएंगे तो कुछ स्टूडेंट कोलेग आपको एक्सेप्ट करेंगे। Abdul, you are asking 7.5 CGPA is good. I think it's decent depending upon आपकी यूनिवर्सिटी के पासिंग मार्क्स क्या हैं। उस पे जर्मन ग्रेडिंग स्केल ऊपर नीचे होता है पासिंग मार्क्स पे। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क आपकी यूनिवर्सिटी में 35% है, तो यू आर वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ 2.5 ऑन जर्मन ग्रेडिंग स्केल, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। अगर आपका पासिंग मार्क 40 हो जाता है, तो एकदम बॉर्डर पे आते हैं आप। तो that's the इक्वेशन वी नीड टू चेक। बट 7.5 अगर आउट ऑफ 10 स्केल की बात कर रहे हैं और आपका 40% पासिंग है, तो भी आप जर्मन ग्रेडिंग स्केल में फिट होते हैं। पार्थ, अभी आई थिंक आपका प्रोफाइल अच्छा है, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स अभी TU9 में लिस्ट करे थे जहां पे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हुई थी। तो डेफिनेटली विद 8.6 और आपकी सिविल इंजीनियरिंग जो वाटर इरिगेशन में है, you can definitely apply for this particular TU9, and a possible admit is there. So somebody is asking, what is the process to get physiotherapist job in Germany? आपको लाइसेंस पास करना पड़ता है जर्मन गवर्नमेंट का, which is known as a state license called approbation, और आपकी बेस डिग्री पे डिपेंड करता है। आपने बेस डिग्री इंडिया से अगर बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करी है, तो उसके बाद अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है जर्मनी में और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पहले वहाँ का एक लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। वो लाइसेंस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं जब आपने C1 लेवल ऑफ जर्मन अचीव कर ली हो और ऑल्सो मेडिकल जर्मन अचीव कर ली हो, तभी आपको ये एग्जाम पूरा जर्मन में होता है। और अगर आपने ये किया, फिर उसके बाद स्टेट लाइसेंस एग्जाम पास किया, तो फिर आप एलिजिबल हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में काम करने के। उसके पहले आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एन इंडियन डिग्री विदाउट पासिंग अ लाइसेंस एग्जाम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का स्कोप बहुत अच्छा है। एनोनिमस अटेंडी है, आई डोंट नो योर नेम, बट यू डेफिनेटली कैन लुक एट अ गुड फ्यूचर in electrical engineering. Engineers in general have a bright future in Germany because there's a lot which is happening with defense from the engineering point of view, and they actually make good money. Engineers actually make good money
as compared to probably some of those management professionals. कुलदीप, आपको अगर डायरेक्ट नौकरी चाहिए है तो प्लीज आप ईमेल भेजिए और सीवी भेजिए. माय टीम विल गेट इन कांटेक्ट विद यू और फिर आपको पूरा डायरेक्शन बताएगी जो हमारा जॉब रिलेवेंट प्रोडक्ट है कि हम किस तरह से आपको जॉब के लिए हेल्प करते हैं, वो आप करिए. उसके बाद हम आपको ये इसमें हेल्प कर पाएंगे. Abdul, level of German, I think has been answered. Excellent. Okay, I think it's time to move on to the next slide. Best TU9 for Masters in Civil. Come to University of Stuttgart, many programs, and TU Dresden. Now let's see the profile. Let's see the profile so that it gets further answered. This I call it a winning profile. You know why I call it a winning profile? Because this profile is something which will bring some admits to you. It's not the profile to qualify to apply, but it's a profile where you can hope a chance to get an admit at a public university, at these TU9 universities. The academic GPA of 2.2. So we're talking about 75% and above. Yeah, even 8 in your bachelor's. We're talking about IELTS of, I put here 6.5, but let's consider 7 or 95 in TOEFL. That's the English language proficiency. GRE 315 is based. Anything above 320 is good. GMAT, if going for a management program at TU9 university, then 650 plus, nothing less than that you should even think of. क्योंकि ये वाला जो प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है ये एडमिशन लाने वाली है, ये एडमिट लेटर्स लाने वाली है, ये सिर्फ अप्लाई करने वाली नहीं है और चांसेस पे छोड़ने वाली नहीं है. ये होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं. इंटर्नशिप्स, एटलीस्ट बैचलर्स लेवल पे 2 इंटर्नशिप्स आपने करी होनी चाहिए. It strengthens your profile, very strongly. Project work, research work, paper publications. फाइनल ईयर में आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो, आपकी मास्टर थीसिस है, आपका पेपर पब्लिकेशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स मैटर. अगर आप सिंपल एक वनीला इंजीनियरिंग लेके जा रहे हो, कहो कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और एक कुछ एक्सपीरियंस लेके पहुंच गए, आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होगा. तो ये चीजें होलिस्टिकली आपके प्रोफाइल में देखी जाती है कि आपने एक्स्ट्रा क्या क्या कर रखा है, जस्ट नॉट स्टडीज, राइट? Academic consistency, ladies and gentlemen, is the most important factor. It's the most important make or break factor for you to get into a TU9 university. What does this mean, academic consistency? Simply putting, कि जो बैचलर्स में कर रहा है उसी से रिलेवेंट मास्टर्स करना है. अगर कुछ ऑफ ट्रैक मास्टर्स करना है बैचलर्स करने के बाद, तो यू नीड टू स्टिल एंश्योर कि जो भी कोई ऑफ ट्रैक मास्टर्स कर रहे हैं आप, उसकी रिलेवेंट कुछ सब्जेक्ट्स आपने बैचलर्स में पढ़े. अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एडमिशन नहीं आएगा, नहीं आएगा. ये मैं अपनी गारंटी और एक्सपीरियंस के साथ आपसे कह सकता हूँ. और जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए अप टू A2 लेवल टू मेक योर प्रोफाइल शाइन. इसके ऊपर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड. नहीं कर सकते तो A2 तक रखिए. तो दीज आर दोज 8 key parameters which you should keep in mind, before you apply to TU9 universities in Germany. Okay, now look at the other slide. ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, यानी कि किसी भी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है तो ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है. जीमैट की रिक्वायरमेंट और लो हो जाएगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है. आप कहीं भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ये वाले प्रोफाइल के साथ. इसमें जीपीए की जो मैं बात कर रहा हूँ 70% की बात कर रहा हूँ. 69-70% वाले भी कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस स्टैंडर्ड प्रोफाइल के साथ अप्लाई कर सकते हैं. जीआरई जीमैट वेव हो जाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, नॉट इन TU9 बट जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटीज और हैं, वहाँ वेव हो जाते हैं. एंड यू हैव अ गुड पॉसिबिलिटी to get into the public universities in Germany and study for free. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ. कॉमन मिस्टेक्स. भाई जैसे अभी मेरे को किसी ने सवाल पूछा था कि मेरे पास ये सब चीजें थी, मेरा एडमिशन क्यों नहीं आया. तो मैं आपको बताता हूँ, शायद इसमें कोई एक रीजन हो जो आपको मिल जाए और आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि शायद इसकी वजह से मेरा एडमिट नहीं आया.
ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमने कोलेट करे हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन फ्लैट हो जाती है। वन ऑफ द रीजन इज नॉट स्टार्टिंग अर्ली। तो अब आपने ये जो प्रोफाइल बिल्डिंग एक्सरसाइज देखी है, दिस इज मिनिमम 1 year जॉब, एटलीस्ट 9 months। आप सडनली सो के उठ के आ नहीं सकते हो कहें कि अब मेरे को आप है ना 3 महीने के अंदर जर्मनी के TU9 में भेज दो। बहुत मुश्किल है। और भेज तब सकते हैं जब आपने ये सारे टेस्ट कंप्लीट कर रखे हो, यानी GRE, टॉफिल, APS, ये सब आपने रेडी कर रखा हो तो जरूर भेज सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी रेडी नहीं किया है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ जर्मन लैंग्वेज नहीं है, कुछ और इंटर्नशिप्स नहीं करे हैं, कुछ और सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आप भूल जाइए, ये 3 से 6 महीने में होगा। हमें कम से कम 9 से 12 महीने का टाइम चाहिए आपकी TU9 में एप्लीकेशन सक्सेसफुल करने की। इतना, चाहे आप हमसे कराएं चाहे आप खुद करें, इतना टाइम तो आपको लगने ही वाला है। आप सबकी टाइमलाइन से अगर आप नोट करेंगे तो आप देखेंगे आपके 6 से 7 महीने सिर्फ आपकी प्रोफाइल बिल्डअप प्रिपरेशन में ही लग गया। आपके GRE की प्रिपरेशन, आपकी टॉफल की प्रिपरेशन, आपकी आइल्स की प्रिपरेशन, आपका जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन, उनकी फिर एग्जाम डेट्स एंड एवरीथिंग, उनके सर्टिफिकेट्स का वेट, उसके बाद एपीएस अगेन टेक्स टाइम। तो आप समझ रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें एड्रेस करनी होती हैं इस एजुकेशन अप्रोच जर्नी में, स्पेशली हम जर्मनी के TU9 की बात कर रहे हैं, बिफोर अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन कुड बी मेड। तो वन ऑफ दोज फैक्टर्स, प्लीज स्टार्ट अर्ली। अगर आप फॉल 24 की बात कर रहे हैं आज की डेट में, मेरे पास यहाँ पे जो सेशन में है, तो आपको आज अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं पहले एग्जाम्स दूंगा, पहले मैं रिजल्ट्स लाऊंगा, उसके बाद अगर पास हुआ तो सोचूंगा कि करना है कि नहीं करना है, माय डियर फ्रेंड्स, यू आर टू लेट। फॉल 24 की बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं जर्मनी में, तो आप फिर वैसे भी लेट हैं। और जो बची होंगी, और फिर अभी भी आप सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, तो अब फॉल 24 तो भूल ही जाइए। समर 24 भी अभी हमारे सामने है और एप्लीकेशन की हो रही हैं, लेकिन आई डोंट नो आप कितने रेडी हैं समर 24 के। अगर आप हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सारे टेस्ट हैं, लेट अस टॉक, लेट अस सिट एंड टॉक, लेट अस हेल्प यू मेक एप्लीकेशंस। वो कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम 1 साल पहले आप स्टार्ट कीजिए सारे प्रोसेस को। ठीक है। चॉइसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। व्हेन आई से टू मेनी चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, डू नॉट स्प्रेड वाइड इन टर्म्स ऑफ योर चॉइसेस। इसका ये मतलब है कि आप एक साथ कह रहे हो भाई आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने मास्टर्स आप मैकेनिकल में अप्लाई कर रहे हैं, ऑटोमोटिव में अप्लाई कर रहे हैं, रोबोटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, IT में अप्लाई कर रहे हैं। अरे क्यों भाई, ये 6-7 चॉइसेस एक साथ क्यों अप्लाई करनी है? किस लिए अप्लाई करनी है? एक फोकस आपको चाहिए ना कि भाई मास्टर्स मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में करना है, उसके बाद मुझे ये पर्टिकुलर जगह नौकरी करनी है, ये पर्टिकुलर रोल में करना है, इतनी सैलरी कमानी है। एंड जैसे वी टॉक अबाउट गोल क्लैरिटी इन द फर्स्ट प्लेस, आपको यही नहीं पता कि जाना क्यों है। पता है जाना है जर्मनी, लेकिन वहां जाके करना क्या है ये भी नहीं पता। पढ़ने जाना है ये पता, उसके बाद क्या करना है। इसीलिए आप 10 तरह की डिफरेंट चॉइसेस लेके जा रहे हो और इवेंचुअली टू रियलाइज कि यार ये तो मेरे को करना ही नहीं था इन द एंड। तो हाउ डू वी रियलाइज दिस कि मेरे को अपना एक फोकस रखना है, एंड दिस इज द स्ट्रीम आई वांट टू परस्यू, और उसी के अकॉर्डिंगली मुझे अपनी एप्लीकेशंस करनी है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको करना चाहिए, जो हम ये आपके लिए गोल क्लैरिटी सेशंस में करके देते हैं, कि आपकी अप्रोच हम इतनी नैरो डाउन करते हैं, फोकस अप्रोच करते हैं, कि आपको भी रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये प्रोग्राम, ये यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये वाला जॉब रोल, ये वाली नौकरी, ये वाली कंपनी और इतनी सैलरी, ये पूरी प्लानिंग यहीं पे होती है इंडिया में आपकी एप्लीकेशन से पहले। और तब कहीं जाके आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है, और तब कहीं जाके आपका करियर भी वहां सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हम ये सब यहां से लेके जा रहे हैं। आपको पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, जर्मनी जाना क्यों है? Why Germany? Let's play a 2 minute Q&A. Put आंसर कीजिए मुझे चैट बॉक्स में, जर्मनी क्यों जाना है? Why do you want to go to Germany? What do you have in your mind when you say कि मेरे को जर्मनी जाना है? या आज आप जो मेरे साथ यहाँ पे जर्मनी के लिए डिस्कशन में बैठे हैं, लेट्स सी आपको जर्मनी के बारे में पता क्या है? पता होगा, लेकिन मेरे को ये पूछना है कि आपको जर्मनी क्यों जाना है। लेट्स सी व्हाट यू आंसर। नो आंसर, किसी को नहीं पता जर्मनी क्यों जाना है। फिर तो ये सेशन में आप अपना टाइम और मेरा टाइम दोनों का वेस्ट कर रहे हैं।
good quality of education, affordable tuition fees, related work experience. Fine. पढ़ाई करने जाना है mechatronics. Okay. Higher study, better life. Experience the work culture. Okay. ये तो आपने एट्रीब्यूट्स बताएं कि भाई वहां जाऊंगा तो ये चीजें मैं करने का सोच रहा हूं. Somebody says it's the strongest economy of Europe and quality of education, work-life balance, and everything. These are all attributes of coming to Germany. आप वहां जाके ये सब तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि ये तो किसी भी जगह आप जर्मनी में जाएंगे तो ये मिलेगा. आपके लिए क्या है वहां? आपका फ्यूचर कैसे बनेगा? हैव यू थॉट थ्रू दैट कि मेरे को जर्मनी में ये मास्टर्स करने के बाद ये वाले जॉब रोल में इस कंपनी में काम करना है? डू यू इवन हैव अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज यू थिंक यू वांट टू वर्क आफ्टर फिनिशिंग योर मास्टर स्टडीज एंड द जॉब रोल्स यू प्रोबब्ली कैन टारगेट? मैं आपको उस लेवल तक की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सोचा है इस बारे में. हमारे साथ इंद्रजीत हैं, वो उनका गोल बहुत क्लियर है. ही वांट टू सेटल देयर एज अ फार्मर एंड हैव अ गुड farm machinery and life. That's the answer I was looking at. That's exactly I was looking at. कि मैं अपनी लाइफ जर्मनी में कैसे देख रहा हूं. उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर कमिंग टू जर्मनी फॉर. बाकी सबने एट्रीब्यूट्स लिखे जर्मनी के जो कि आपको वैसे भी मिलेंगे. राइट? तो ये होता है गोल क्लैरिटी में. और ये अगर आपको पता नहीं है अभी, जो कि मुझे लग रहा है काफी लोगों को नहीं पता है, इज वेयर यू नीड टू फर्दर सोल सर्च कि मुझे जाना क्यों है, वहां जाके करूंगा क्या. एक स्टडी तो आपका पाथवे है जर्मनी जाने का. इट्स द रूट, इज द कॉज फॉर यू टू ब्रिंग टू जर्मनी. लेकिन व्हाट इज द डेस्टिनेशन? योर डेस्टिनेशन इज नॉट जर्मनी. योर डेस्टिनेशन इज नॉट मास्टर्स प्रोग्राम. तो व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? दैट इज व्हाट यू नीड टू हैव इन योर माइंड. दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक थ्रू. राइट? जनरली ये मैं गोल क्लैरिटी में करता हूँ. आपके लिए बोनस मैंने आज इस सेशन में कर दिया, but that's what I think you guys come here, listen to me, so I'm happy to deliver. To think through it, okay? Again, another point where you probably find yourself stuck. आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, यानी कि जीआरई, जीमैट, टॉफेल, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपने करनी है. अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर इसमें मुश्किल होती है. रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो फिर वो TU9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो छूट जाता है, फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज पब्लिक वाली देखनी पड़ती है. बट लेकिन अगर आप TU9 के लिए एम कर रहे हैं तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. स्कॉलरशिप्स, डोंट आस्क फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि अगर पब्लिक में कर रहे हैं तो वैसी स्कॉलरशिप मिल गई है. ट्यूशन फीस आपको अरेंज करनी है, सॉरी लिविंग कॉस्ट आपको अरेंज करनी है. अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तो लिविंग कॉस्ट की भी स्कॉलरशिप्स मिलती है. फाउंडेशन बहुत सारे हैं जो देते हैं और हम उसको आप तक ला सकते हैं. डोंट रिलाई ऑन पार्ट टाइम जॉब्स, यानी कि आपको अपनी अगर पढ़ाई करने जाना है मास्टर्स तो 2 साल करने हैं तो 2 साल की पूरी फंडिंग रेडी करनी है. यू विल नॉट रिलाई ऑन योर पार्ट टाइम जॉब्स टू मेक यू एंड मीट्स, क्योंकि उस अगर आप वो करेंगे तो आपकी स्टडी सफर करेगी. और TU9 की स्टडीज इजी नहीं है. दे आर इंटेंस प्रोग्राम्स. 2-year intense program at these TU9 university will make you slog and sweat. और उस बीच में कहीं आपको टेंशन आ गई कि यार पैसे भी कमाने हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, फिर नहीं हो रहा आपका 2 साल में मास्टर. आराम से आप 3 साल 4 साल लगाएंगे और सिर्फ पार्ट टाइम की नौकरी करते रहेंगे विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप फ्री की स्टडी पढ़ने आए थे और आप 4 साल से वो कर रहे हैं और आप 40 लाख रुपए गवर्नमेंट में को दे चुके हैं, वहां खर्च कर चुके हैं और आप आज भी फुल टाइम प्रोडक्टिव नहीं हुए. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सोच के जाना है कि भाई हमारे पास फंडिंग होनी चाहिए. और फंडिंग है, एजुकेशन लोन के थ्रू सारी फंडिंग अवेलेबल है. बहुत इजी है आज की डेट में. हम कोलेटरल फ्री लोन अप टू 30 lakhs इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इन जर्मनी. हमारे एक्सपर्ट को रीच आउट कीजिए, हम आपका 7 दिन के अंदर एजुकेशन लोन सैंक्शन करा के देंगे, वो भी कोलेटरल फ्री. जो पैसे अवेलेबल हैं, आपके पास प्रोफाइल है, जाइए उसके लिए, रुकना क्यों है. और पैसे को, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, पैसे को अपनी पढ़ाई और अपने डेस्टिनेशन के बीच में बॉटलनेक मत बनाइए, क्योंकि पैसा आज की डेट में अवेलेबल है. ये चैलेंज पहले था जब पैसे अवेलेबल होते नहीं थे, बैंक फाइनेंस ही नहीं करते थे, बहुत ही लिमिटेड फाइनेंस करते थे. मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ. 20 साल पहले मैं भी एजुकेशन लोन पे गया था. 20 साल पहले गया था एजुकेशन लोन पे. आई वॉज एक्चुअली द फर्स्ट person in my small town, very small town,
जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी को जर्मनी जाने के लिए एजुकेशन लोन दिया था। मैं भी लोन पे ही गया था। तो जब बैंक रेडी है और पैसे दे रहे हैं, यू शुड नॉट हैव अ सेकंड थॉट टू टेक दिस मनी। रीपेमेंट बहुत आसान है, आगे होता है, सब सेटल हो जाता है, राइट। द लास्ट फैक्टर विच यू शुड कीप इन माइंड इज द एकेडमिक इनकंसिस्टेंसी, जो मैंने आगे अभी बात करी है कि भाई बैचलर्स कुछ किया, मास्टर्स कुछ करने जा रहे हैं, मैच ही नहीं हो रहा, सब्जेक्ट्स ही नहीं है और पढ़ाई कुछ और करनी है, आपको एडमिशन TU9 में नहीं मिलेगा। सो कीप दीज common mistakes in mind when you plan, when you think through about your possibilities coming to Germany or coming to TU9 universities. Okay. पार्ट टाइम जॉब्स, कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं जो आप कर सकते हो, इज व्हाट वी वांटेड टू एड्रेस। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, सबसे पहला और इजी रहता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में अप्रोच कीजिए, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, अलुमनी डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर के साथ रिलेशंस बनाइए, उनको अप्रोच कीजिए और उनसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी सीख कीजिए। ये मैंने किया था, ये मैंने 20 साल पहले किया था। मैं तो इतने स्मॉल टाउन में गया था MBA करने के लिए। आई वाज इन ब्लैक फॉरेस्ट, जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइक मी टू वर्क पार्ट टाइम, स्पेशली इन द बैकड्रॉप, जहाँ पे सिर्फ जर्मन मुझे A1 लेवल की आती थी, और आपको अगर वहां नौकरी करनी है तो एडवांस चाहिए। वो सेकेंडरी मैटर है लैंग्वेज, लेकिन पहला प्राइमरी फैक्टर था, वहाँ इंडस्ट्री नहीं थी और पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। So what I did, I approached my professors, I made a reputation with them, and I got a part-time opportunities to work for them till the time I finished my MBA. तो ये आपको पहला अप्रोच वहां करना है, दूसरा आपको अपने नेटवर्क में कलीग्स में देखना है, तीसरा बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं जहां जहां पे ये जॉब्स देख सकते हो। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा ये एरियाज हैं जहां पे आप ये जॉब्स ढूंढ सकते हो। यूनिवर्सिटी का बुलेटिन बोर्ड है, कैरियर सेंटर, यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है। Directly walk into any supermarket, restaurant, ask for a job, ask for referrals from friends and fellows. These are those factors which will help you to find your part-time jobs. Again, think through it कि क्या आपको सही में पार्ट टाइम जॉब चाहिए। डू यू रियली वांट अ पार्ट टाइम जॉब? TU9 है, इंटेंस प्रोग्राम है, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अब यहाँ से तैयारी करके जाइए। पार्ट टाइम मिल जाता है इज गुड, बट डू नॉट फ्रेट पहले दिन से, अरे यार नौकरी करनी है, खर्चा कैसे चलेगा। मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो डू नॉट फ्रेट, फोकस फॉर व्हाट यू आर देयर, स्टडीज, दैट्स व्हाट यू शुड डू, राइट। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम हैं थ्रू आउट जहां हमारे स्टूडेंट्स करेंटली स्टडी कर रहे हैं। दीज आर ग्लोबल लिस्ट, जर्मनी की भी है, US की भी है, कनाडा की भी है, UK की भी है, नेदरलैंड्स की भी है। सम ऑफ दोस सक्सेस जो हम आपको बता रहे हैं कि हम ये इन टॉप लेवल्स में यूनिवर्सिटीज में एडमिट कराते हैं। आपके TU म्यूनिख भी है, TU ड्रेसडेन भी है, काफी जगह हम काम करते हैं। तो यहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल उनकी एडमिशंस कराई हैं, उनका पूरा प्रोसेस किया है। आपकी भी इसमें से कोई एक यूनिवर्सिटी हो सकती है जहां हम आपके लिए आगे जाके हेल्प करें इन केस यू नीड। एक छोटी सी वीडियो प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, जस्ट टू लिसन कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमने सक्सेसफुली प्लेस करे हैं वो हमारे बारे में क्या बात है। Now I am studying in the UK, Dream University, that is the University of Liverpool. So I am happy with that. I am going to study in Masters in Advanced Computer Science. My name is Abir and मैं finally जा रहा हूँ UK. मैं बहुत खुश हूँ. I have decided to join University of Toronto and pursue Masters of Architecture there for 3 years. It's in Queen's University, Belfast. And I researched about the university as well. It's been one of the oldest universities and it's ranked among the top 10 universities in UK. My admits were ASMT Berlin, Copenhagen Business School and Cambridge Judge Business School. I accepted the admit from Cambridge Judge Business School. सुमित सर ने मुझे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने से प्लस मेरे डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्लस वीज़ा प्रोसेस एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी लगती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को,
उसके लिए मेरी बहुत मदद की. The overall procedure, Dhananjay sir and Jitendra sir are like my good mentors that I have met. Overall experience was good. I like Dhananjay's help throughout. He kept you and me in touch completely. I enjoyed the service. In the way where Dhananjay ji, Jitendra ji stayed in touch with me every time for everything since the start, not just the process of finding universities. They gave me ample of options all over the country. I feel like all over the continent, we can say, not even the country. UK we found, Germany and Italy we was going. So lots of things happened. I was really impressed with the work that Manali did. She did some really good content writing work. It was amazing. When it comes to payments, when it comes to sending out the applications, everything was like before time. There were certain things that even I did not know that I might be looking for, and then when you guys maybe pointed it out, it was something that really helped me. Whatever intakes or what kind of salaries they offer. One of the 3 criteria you filter your colleges into categories on. So I really think that helped me out quite a lot to feel. For me, I think the whole procedure was really very well and good. There is nothing like I can complain about that because my whole procedure went very smoothly. मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ TU Gateway, सुमित सर and your whole team. I got few successes. Only the major one was the University of Toronto. I didn't look back when I got into University of Toronto. Nothing else also mattered for me. The counseling that you do and the confidence you instill just by telling someone that no, you can get into this college. That is something that I did not see when I was scouting for other counselors. I think you guys gave you 100% for finding the best course for me and the best university for me in my budget as well. So that was the best thing. It was there. It was a roller coaster, but it was a great ride to this ride. Right, that was the short story around what our students talk about. There are various individual stories that are also available for Germany and for other countries, but this time does not permit us to publish these. If you want to have individual stories of people who are studying at various universities in Germany, reach out to Dhananjay, reach out to Alpana, and they will share you those success stories as well for a viewership. My next presentation is mostly about our services, and what I also want to give it to you, apart from the services, that's secondary, and the charges we make, we usually do that, and the work itself says that we need to make some money. So वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन most important आपके लिए जानने के लिए जरूरी है कि जर्मनी जाने से पहले आपका पैसा कितना खर्च होने वाला है. मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी जाना है, TU9 में भी जाना है, तो आपका ओवरऑल आपका पैसा कितना खर्च होने वाला है. तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि अगर हम TU9 स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं और हमको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए सारे एग्जाम्स, सारे टेस्ट, ये सारी चीजें अगर अकम्प्लिश करनी है, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है, ये मैं आपको ये आने वाली स्लाइड्स में बता रहा हूँ. अगर आपको इसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, आप डेफिनेटली ये सेशन को अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वी ओनली टॉक अबाउट आवर सर्विसेज, द कॉस्टिंग, द प्राइसिंग, द बेनिफिट्स फॉर यू, bonuses for you, discounts for you. Now this is where it comes to. तो अगर आपको लगता है कि ये सब आपको नहीं सुनना है, नहीं जानना, आप अपने आप कर सकते हो, प्लीज गो अहेड, डू दिस. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा सबको फ्री रखता हूँ. लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जितनी मैंने आपसे बात करी, जो भी मैंने आपको बताया, इट हैज मेड सम सेंस टू यू, क्योंकि ये रियल लाइफ है और ये मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. तो जो मैंने कम से कम 10,000 बच्चों को काउंसिल किया होगा और सक्सेसफुली सब जगह प्लेस किया है, और सबके प्रोफाइल बहुत क्लोजली मैंने रीड करे हैं, समझे हैं, और उनको फिर उनकी पोजीशन तक पहुंचाया है. तो देयर हैज टू बी सम सब्सटेंस व्हाट आई सेड. तो अगर वो आपको वैल्यूएबल लगा है, तो आई फॉर दैट आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट यू स्पेंड दिस टाइम. फॉर द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू गिव मी अ थम्स अप, please put it in the chat box. Kindly continue. For those who are not looking at these services and they are self-sustained,
you have my great blessings to go ahead, and best of luck with your application process and everything. Just let me know if I continue or not. Okay, so I guess I have an yes from all the people here who says that please continue. So please have a look at my next slide, but do not fret over it. Just have a look at it, okay? This is the package price for TU9 applications. Only TU9, regardless, with a guaranteed admit coming from 2 to 3 universities based on the choices of the subjects you have taken. अब इसमें क्या होता है, ये सर्विसेज हैं, प्री एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, पोस्ट एप्लीकेशन, काफी चीजें, मतलब A to Z कवर करते हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता हो कुछ आपको जो प्रोग्राम्स करने हैं वो ये TU9 में शायद अवेलेबल ही नहीं हो, राइट? इट्स क्वाइट पॉसिबल. In that scenario, apart from जो आपकी TU9 की यूनिवर्सिटीज हैं, हम टॉप 11 यूनिवर्सिटीज जर्मनी की जो हैं, जो जर्मनी की टॉप और 11 यूनिवर्सिटीज हैं, हम वो भी कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल Friedrich Erlangen University, Nürnberg and Langen, right? Then TH Ingolstadt, Esslingen University of Applied Sciences, University of Bonn, University of Heidelberg, LMU, Ludwig Maximilian University. Yeah. You have few more which are, I don't remember the name, but they are the top ones. तो ये पैकेज प्राइस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी का, अगर आपका प्रोग्राम वो पर्टिकुलर TU9 में नहीं है, तो ये सिर्फ ये टॉप और जो 11 यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी की, वो भी इस पैकेज में टारगेट होंगी. सो रफली स्पीकिंग 20 यूनिवर्सिटीज, 20 टॉप यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग TU9 की 9 और 11 अलग, टोटल ये 20 यूनिवर्सिटीज टारगेट होंगी इस पैकेज प्राइस में, जिसमें से आपका रॉक सॉलिड प्रोग्राम निकल के आएगा, गारंटेड एडमिट आएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हम करते हैं, सारी स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन हम कराते हैं, ये सब चीज हम करके देते हैं आपको इस पैकेज प्राइस में. दिस इज वन फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ होल्ड ऑन, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट एज आई सेड, आपको समझने के लिए कि आप जर्मनी के, अगर आपका प्रोग्राम TU9 में मिल जाता है तो हम कोई और यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. अगर आपका प्रोग्राम TU9 में नहीं मिल रहा है तो फिर हम आपको एडिशनल वो जो टॉप 11 यूनिवर्सिटीज हैं वहां से आपका प्रोग्राम निकाल के देंगे और आपका एडमिशन ला के देंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल. नाउ check this next slide, which is actually most important, even more important than this slide. The cost. अब आपको ये नीचे जो दिख रहा होगा, आप सडनली कहोगे व्हाट नॉनसेंस, अब इतने पैसे लगते हैं क्या जर्मनी में पढ़ने जाने के लिए? ये अभी तो आप गए नहीं हो जर्मनी, उस और तभी आपकी कॉस्ट खर्च होनी है. अब आप समझो कि कहाँ कहाँ आपकी कॉस्ट जा रही है, और ये कॉस्ट इज एक्सक्लूसिवली रिलेवेंट फॉर TU9 यूनिवर्सिटीज. क्योंकि अगर TU9 यूनिवर्सिटीज में जाना है तो GRE या GMAT करना ही करना है, TOEFL या IELTS करना ही करना है, जर्मन लैंग्वेज के 2 लेवल करने ही करने हैं, और फिर गोएते का सर्टिफिकेट भी लाना है, राइट? इसके अलावा मिसलेनियस आपकी एप्लीकेशंस के जो एक्सपेंसेस है वो हैं. तो लिसन कि क्या क्या कॉस्ट है. GRE की मार्केट में ट्रेनिंग कॉस्ट इज रफली अराउंड 30-35,000 रुपीज, आपकी पहली कॉस्ट है. आपकी TOEFL की ट्रेनिंग डिपेंडिंग ऑन 8 to 10,000 रुपीज, आपका 1 से 2 महीने का कोर्स की फीस. ये फीस आपको कम से कम, एज आई हैव सेड ऑलरेडी, कि 2 लेवल जर्मन के करने हैं. आज की डेट में जर्मन लैंग्वेज सीखने की जो कॉस्ट है वो रफली 15 से 20,000 रुपीज पर लेवल की है मार्केट में. तो आपको 2 लेवल करना है तो रफली यू कैन थिंक अराउंड स्पेंडिंग 30 to 40,000 रुपीज. हमने एक 30,000 का बेस लेवल लिया. 10 एप्लीकेशंस होंगी आपकी इस प्राइस में, तो 10 एप्लीकेशंस में अगर सारी यूनी असिस्ट से होती हैं तो रफली हर एक एप्लीकेशन पे करीबन 3,000 रुपए खर्च होंगे आपके. 30 यूरोज 90 के रेट से 2,700, अराउंड दैट 30,000 रुपीज. अगर 10 की 10 आपकी यूनी असिस्ट में गई तो रफली आपको बजट करना है 30,000 रुपए. ये यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस है, ये मेरी नहीं है,
यूनिवर्सिटी की और जो आपको एक्चुअल में लगने वाली है। आपकी एपीएस की फीस आपको पता है, अब 18,000 रुपए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लग रहे हैं जो आपको एम्बेसी में देना है। इसके बाद आपके कुरियर के कुछ चार्जेस होते हैं, मिसलेनियस कुरियर चार्जेस में 4-5 हजार रुपए आप ये पकड़ के चलिए। उसके बाद आप जीआरई की ट्रेनिंग अलग होगी और जीआरई का जो टेस्ट देना है आपको, वो टेस्ट की फीस आपकी अलग है। 22,500 रुपए लगभग आपकी जीआरई की टेस्ट की फीस है। आपकी टॉफल की टेस्ट फीस 16,900 रुपए है। आईएलटीएस की 16,250 है। आपके गोयते का टेस्ट लेना है, अगर आप डायरेक्ट A2 लेवल टेस्ट लेते हैं और आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आपके 9,800 रुपए टेस्ट फीस है। अब आप इन सब को ऐड कर लीजिए और इस पे किसी भी आप कंपनी में जा रहे होंगे करने के लिए और उनके पास अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको 18% जीएसटी देना पड़ेगा आपको। तो ये कॉस्ट आपकी रफली 2 लाख रुपए के पास आ जाती है आपका जीएसटी लगा के। तो ये तो आपकी प्लस कॉस्ट है ही, ये मुझे नहीं चाहिए, ना मैं मांग रहा हूं ना आप मुझे दो, लेकिन ये आप दिमाग में रखो कि भैया पहले जर्मनी जाने से पहले ही ये सारी तैयारी करनी है, तो 2 लाख रुपए तो ये लग गए आपके। उसके बाद आप मेरी कंसल्टेशन पे आओ जो कि 90,000 प्लस 18% जो हमारी कॉस्ट है वो है। तो लगभग ओवरऑल कॉस्ट अगर आप हमारे साथ करते हैं तो ये 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, अगर हम स्पेसिफिकली TU9 या टॉप 11 यूनिवर्सिटी जर्मनी की टारगेट कर रहे हैं तो ये आप ओवरऑल एक मोटा मोटा खर्चा देख रहे हो। अब आप इसमें 10, 20, 25, 50 हजार रुपए बचा लोगे कि भाई जीआरई का वेवर मिल जाए, टॉफल का वेवर मिल जाए। आप याद रखिए, अगर आप ये वेवर्स ढूंढ रहे हैं तो आप TU9 भूल जाइए। वन ऑफ लकी आप हो जाएंगे कि अगर आपको वो प्रोग्राम मिल गया जहां पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वुड हैव दीज रिक्वायरमेंट्स। तभी तो ये विनिंग प्रोफाइल है ना, तभी तो ये एक्सपेंसिव है, तभी तो हम TU9 की बात कर रहे हैं, राइट। 2 से 3 लाख रुपए का आपका खर्चा, 2 से 3 लाख रुपए का आपका खर्चा होगा स्टार्टिंग में जर्मनी पहुंचने से पहले अक्रॉस दीज टॉप 20 यूनिवर्सिटी। ये क्या होता है, हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं लेकिन हम ये दिमाग में कॉस्ट लेते नहीं है, और जब लेते हैं तब रियलाइज होता है कि छोटा छोटा करते करते यार ये तो बहुत पैसे खर्च हो गए। अच्छा, इस कॉस्ट में मैंने आपकी फ्लाइट टिकट नहीं डाली है, इस कॉस्ट में मैंने आपकी वीजा की फीस नहीं डाली एप्लीकेशन की, इस कॉस्ट में मैंने आपका हेल्थ इंश्योरेंस की फीस नहीं डाली है, इस कॉस्ट में मैंने आपकी कुछ जो मिसलेनियस शॉपिंग करेंगे आप जाने से पहले वो नहीं डाली है। करीबन लाख रुपए आप वो पकड़ लीजिए, तो 3 लाख रुपए तो आपके डाउन हो गए, प्लस हमारी कॉस्ट, आपकी शॉपिंग, आपकी फ्लाइट टिकट, आपका वीजा की फीस, वो लाख रुपए आप वो रख लीजिए, करीबन 2 लाख रुपए ये तैयारी में लग रहे हैं, तो 3 लाख रुपए तो ये हो गए, प्लस आपकी हमारी आपने हमारी फीस दी तो 4 लाख रुपए पे आ गया। दैट्स द कॉस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कमिंग टू स्टडी एट TU9 universities in Germany, top public universities in Germany, regardless। आपके पैसे से वहीं बचेंगे जहां पे आपको फॉर एग्जांपल ये टॉफल नहीं देना, ये जर्मन लैंग्वेज नहीं देना, ये जीआरई नहीं देना। अगर ये 2-3 टेस्ट आपके हट गए तो ऑब्वियस सी बात है आप 60, 70, 80 हजार रुपए बचा लोगे। लेकिन फिर आप TU9 की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप वेबर वाली यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं और पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। कहीं आप लकी होंगे तो टॉप में मिल जाएगा एडमिशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि एप्लीकेशन इतनी जा रही हैं इंडिया से कि they don't need people who does not have these requirements, who does not fulfill these requirements. And that is where the hard hitting fact for all of you here tonight is कि बाप रे इतना पैसा लगने वाला है। ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सारा पैसा कैसे लग सकता है। ये ऐसे लग सकता है क्योंकि ये सारी एक्चुअल कॉस्ट है। आप एपीएस आप बच नहीं सकते, टेस्ट की फीस चाहे जीआरई हो टॉफल हो, आप टेस्ट की फीस तो टेस्ट बुक कराना है तो वो फीस तो लगनी है, देनी है। जर्मन लैंग्वेज आपने करनी है तो कोई तक एग्जाम भी देना है, तो ये सारी कॉस्ट है। वीजा की फीस देनी है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है। तो पैसे कहाँ बचा सकते हो, किधर बचा, जो पैसे बचा सकते हो आप वो मेरी कंसल्टेशन में बचा सकते हो कि सर आप ही डिस्काउंट कर दो, बाकी तो ये एक्चुअल्स है। दैट्स द ओनली प्लेस वेयर यू कैन सेव मनी, एंड दैट्स व्हाई प्रिसाइसली व्हाट आई वांट यू टू सेव मनी इन माय नेक्स्ट स्लाइड। आप कंप्लीट पैकेज ले लीजिए ऑल इंक्लूसिव 2,70,000 रुपीज में। हमारी कंसल्टेशन फीस, आपके सारे ये टेस्ट में कवर कर दूंगा, आपकी सारी ट्रेनिंग में कवर कर दूंगा, आपका सारी एपीएस की फीस में कवर कर दूंगा, आपकी सारी वीजा फीस सब इसमें कवर कर दूंगा। सिर्फ आपकी फ्लाइट टिकट कवर नहीं करूंगा और आपकी शॉपिंग कवर नहीं करूंगा और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं कवर करूंगा, बाकी सब कवर कर दूंगा। आप इसमें एडवांटेज देखिए, आप 3,07,000 रुपए जो बहुत एक्चुअल्स हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए के करीब एक्चुअल्स है, बाकी हमारी फीस है। मैंने अपनी फीस में स्ट्रेट अप 30-35 हजार रुपए
ऑफ कर दिया अगर आप कंप्लीट पैकेज के साथ आते हैं। यू एक्चुअली कैन सब्सक्राइब टू दिस कंप्लीट TU9 पैकेज, दिस इज द कॉस्ट। और ये मेरी बनाई कॉस्ट नहीं है, आप कहीं भी जाइए वेरीफाई कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे कुछ भी मत दो, आप तो मेरी कंसल्टेशन फीस जो है ना 90,000 रुपीज की, आप तो वो दे दो मुझे। आप और बाकी सब आप खुद कर लो, हम गाइड करते रहेंगे। आप ट्रेनिंग अपने आप करो, आप टेस्ट अपने आप बुक करो, आप जर्मन लैंग्वेज अपने आप सीखो, आप एप्लीकेशन की फीस अपने आप दो, आप APS की फीस अपने आप दो। हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि तो एक्चुअल फीस है, आप कहीं भी वेरीफाई कर लीजिए। आई नो फॉर श्योर अगर आप जर्मनी के लिए आज यहाँ बैठे हैं तो आपको ये मालूमात है कि हाँ इतनी फीस लगती है। ये सारी प्री रिक्वायरमेंट हैं जो आपको खर्च करने पड़ेंगे पैसे। तो या तो आप अपने एंड पे खर्च कर लो अगर आपको फायदा चाहिए, क्योंकि आप इंडिविजुअल ऐसे जाओगे बुक करने, आपको कोई एडवांटेज नहीं देगा, कोई डिस्काउंट नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। आप हमारे साथ आते हो, मैं आपको पैकेज डिस्काउंट दे रहा हूँ पूरा 30 से 35 हजार रुपए आपके बचा लूंगा इस पूरे पैकेज में। ये फायदा है आप अगर हमारे साथ काम करते हैं। एडिशनल एडवांटेज, फुल कंप्लीट पैकेज अगर आप लेते हैं, आपको टॉफल और GRE की फीस पे डिस्काउंट मिलता है, टेस्ट फीस पे डिस्काउंट मिलता है, लैंग्वेज फीस पे डिस्काउंट मिलता है, सारी एंसिलरी सर्विसेज हैं ये सब हम आपको फ्री में करके दे देते हैं। और आपका जो रेमिट फॉरेन ट्रैवल सर्विसेज है वो सब हम करके दे देते हैं विद इन दिस पैकेज प्राइस। दीज आर ऑल एड ऑन सर्विसेज विद इन दिस पैकेज ऑफ 2,70,000 विच वी विल डू इट फॉर यू। अब ये मत समझो 2,70,000 आपने मुझे इकट्ठे देने हैं, या ये 270 भी आप मुझे दोगे ना, उसमें से 40-50 हजार रुपए तो मैंने गवर्नमेंट को दे देना है, और 2 लाख रुपए आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो हमारे पास 20-25 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बचने वाला आपकी कंसल्टेशन करने के लिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, आपकी एप्लीकेशन ढूंढने के लिए, आपके पेपर सेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमको बच क्या रहा है 20-25-30 हजार रुपए। तो आई थिंक आपको मार्केट पता होगा, 25-30 हजार रुपए में आपको जर्मन कंसल्टेशन कोई नहीं देता आज की डेट में। सारा काम आपको करना है, और जो कर रहे हैं कंसल्टेशन आपको पता है मार्केट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सिर्फ कंसल्टेशन के चार्ज कर रहे हैं, और ये एड ऑन सर्विसेज कोई नहीं देता जो मैंने आपको ये पैकेज में आज आपको ऑफर करी है। You could decide on your own, you can think on your own, but this is the actual picture for studying at TU9 universities in Germany and the associated cost. अगर आप इसमें फिट नहीं होते, आप TU9 के लिए नहीं हो, आप इसमें फिट नहीं होते, आपको ये करना ही नहीं है, और ये सब चीजें, ये झमेले में पड़ना नहीं है, इतनी बड़ी कॉस्ट में जाना ही नहीं है, सिंपल से हमारी प्रोडक्ट सेग्रीगेशंस हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, चाहे एडमिशन एक्सप्रेस ले लीजिए, चाहे प्रीमियम कास्टिंग ले लीजिए। एडमिशन एक्सप्रेस फटाफट सर्विस वाली है, आप हमको सिर्फ कमिटमेंट फीस देते हो, हमको आप कोई कंसल्टिंग फीस नहीं देते, ओनली कमिटमेंट फीस जो आप हमको देते हैं 15,000 रुपए की कमिटमेंट फीस है। आपका सारा काम करके दे देते हैं हम, आपका एडमिशन ला के देते हैं, आपका वीजा कराते हैं, आपका अकोमोडेशन कराते हैं, 15,000 रुपए में सब करके दे देते हैं, प्लस टैक्सेस हैं, लेकिन 15,000 प्लस टैक्सेस में आपको सब करके दे देते हैं विदाउट, इट्स अ नो फ्रेल प्राइस। लेकिन ये इसमें 15,000 रुपए में कमिटमेंट फीस दे रहे हो, ये कमिटमेंट फीस है जो आप मुझे देते हो, और इसमें आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं टारगेट हो रही है आपकी, या आप इसमें कह लो कि भाई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज नहीं टारगेट, क्योंकि टॉप रैंक के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। ये दीज आर नॉर्मल यूनिवर्सिटीज, आप एक पाथवे ढूंढ रहे हो बाहर निकलने का, हम आपको इस कमिटमेंट फीस में आपको जर्मनी पहुंचा देंगे। अगर आप प्रीमियम कंसल्टिंग पैकेज लेते हो जहां पे हम ये टॉप यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, TU9 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो इसमें आप कोई से भी ये पैकेजेस ले सकते हो। गो यूरोप MBA है, फाइनेंस मास्टर्स है, बैचलर एंड मास्टर्स काउंसलिंग पैकेज है, जो आप जर्मनी में, फॉर एग्जांपल इफ यू ओनली वांट टू टारगेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज बट नॉट द TU9, बट ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो आप मेरा ये मास्टर का काउंसलिंग पैकेज ले सकते हो, जस्ट कॉस्ट 65,000 प्लस टैक्सेस। ये हमारी कंसल्टिंग फीस है, बाकी सब एड ऑन जो है, जहां जहां वेवर हो जाएगा वो वेवर मिल जाएगा आपको, जहां रिक्वायरमेंट है टॉफल IELTS की वो टेस्ट आपको देना है, उतनी कॉस्ट है। APS भी भरनी पड़ती है तो आपको करनी है। स्टडी इन इटली है, IB MBA है, IB MBA है, US MBA। तो ये वेरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्राइस, अलग अलग रेंज के। गो यूरोप MBA अलग रेंज में है, फाइनेंस मास्टर की अलग कॉस्टिंग है, इटली की अलग कॉस्टिंग है, IB MBA की बहुत ही अलग कॉस्टिंग है, तो सबकी अलग अलग कॉस्टिंग है। अगर आप जर्मनी के लिए और नॉर्मल पब्लिक यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं तो आप मास्टर काउंसलिंग में आ जाइए, TU9 को छोड़ दीजिए, 65 प्लस 18% चार्ज है, हम आपका करके दे देंगे और आपको हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में पहुंचा देंगे। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड द differences and the costs, which probably so far nobody would have presented to you in such an elaborated manner, which I'm trying to do tonight. Right, before I get on to the bonus, let's see if you have any questions on these
on these pricing and on these services, if you have anything which is coming, which is striking your mind. Put your questions in the chat box in the Q&A. Happy to answer. Okay. Shares comparison of Ireland and Germany for data science. Mostly Germany के जो data science public universities के 2 साल के हैं, intense program होते हैं और उसके बाद requirement बहुत सारी है, तो आराम से जॉब मिलेगी. आयरलैंड के मोस्टली 1 साल के प्रोग्राम है और रफली 2 साल में जो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के डेटा साइंस में खर्च करोगे वही आप 1 साल में आयरलैंड में खर्च करोगे, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में आयरलैंड की गए. अगर आप बहुत ही मीडियोकर यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पे सिर्फ 1 सेमेस्टर पढ़ाई होती है और 1 सेमेस्टर थीसिस लिखनी होती है, then you have to very clearly define your objective भी जा क्यों रहे हैं. सीधे नौकरी करने जा रहे हैं कि पढ़ने भी जा रहे हैं और फिर नौकरी करने जा रहे हैं, बसने जा रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. That's how you can do the comparison. खैर, let me continue with my bonus. I know we are running short of time now. तो जो लोग रुके हैं, थैंक यू सो मच. बोनस तो पहले मैं आपको 3 बोनस अनाउंस कर देता हूँ, उसका फिर तरीका बताता हूँ वो कैसे मिलेगा. तो पहला बोनस मैं आपको दूंगा, ये TU9 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट है, more than 220 odd programs which are entirely in English. ये पूरी लिस्ट मैं आपको ईमेल पे भेजूंगा जब आप मुझे मैसेज करेंगे. This is the bonus number 1, a complete guide on TU9 universities English taught masters program. Number 2, आपको मैं भेजूंगा यूनिवर्सिटी ड्यू डिलिजेंस गाइड, हाउ टू शॉर्टलिस्ट योर परफेक्ट यूनिवर्सिटी. That's my bonus number 2 for the evening, which I am announcing here tonight. Number 3, एक एक्सक्लूसिव बोनस मैं उन सबको अनाउंस कर रहा हूँ जिन्होंने D6 किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे D6 किया है. ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है एंड माय टीम विल वेरीफाई. आपको एक्सक्लूसिव 101 प्रोफाइल एवेल्युएशन कॉल मिलेगा मेरे साथ 30 मिनट, जहां पे आप अपनी सारी चीज मेरे से पूछ सकते हैं. इट्स एन एक्सक्लूसिव 101 30 minutes profile evaluation call with me, the founder of EUGateway. This is a bonus for all the people who did D6 in the social media. That's the bonus number 3, which I have announced. And last but not the least is the discount for tonight is 15% on all the services which we have just mentioned. And how you can avail this discount is where the interesting part is. Lock this discount by just paying 2,000 rupees tonight and keep this discount valid for the next 4 weeks before you complete the entire other registration formalities. Now, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो डिस्कशन ही नहीं किया, अभी भी समझ में नहीं आया, करूं नहीं करूं, क्या करूं. भाई कुछ मत कर, ये डिस्काउंट लॉक कर, क्योंकि ये 15% आज मिल रहा है, ये कल नहीं मिलेगा और इस सेशन के बाहर नहीं मिलेगा. तो डिस्काउंट लॉक करो. प्रोडक्ट डिस्कशन उसके बाद करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए. ये जो TU9 का ये पैकेज है, ये कस्टमाइजेबल पैकेज है, ये प्राइस आपकी और ऊपर नीचे हो सकती है इसमें. और अगर आपको सिंपल पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो वाला पैकेज की बात करते हैं. बट दैट्स वेयर आई थिंक आई कैन ऑफर यू सम ऑफ दोस कस्टमाइजेशंस. और कस्टमाइजेशन का डिस्कशन आप आगे की डेज में छोड़ सकते हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना डिस्काउंट लॉक कीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट बाहर नहीं मिल रहा है. अगर आप फुल पैकेज की बात करते हैं तो 270 का पैकेज है, जहां पे आप ये 15% का डिस्काउंट लगा रहे हैं 3,07,000 के प्राइस पे, तो 37,000 रुपए आपके ऑफर है, 37,000 रुपीज. वी आर टेकिंग दिस हिट ऑफ 37,000 रुपीज ऑन अवर कंसल्टिंग फीस, क्योंकि बाकी सारी जो एक्चुअल है वो तो आपने करनी है, वो तो आपको बिल और रिसीट हमारे तरफ से मिलेंगी सारे. लेकिन वी आर टेकिंग अ हिट ऑफ 37,000 रुपीज ऑन अवर कंसल्टिंग प्राइस अगर आप फुल TU9 के पैकेज पे जाते हैं, जो कि 2,70,000 रुपीज का इंक्लूडिंग टैक्सेस. अगर आप वो नहीं करना है तो आप TU9 एक्सक्लूसिव पैकेज है, जो बाकी सारी चीजें आप खुद कीजिए, हमारी जो सर्विस फीस है आप वो दीजिए.
उस पर मैं आपको 15% डिस्काउंट बिल्ड कर दूंगा। वो 15% डिस्काउंट बिल्ड करने के बाद अप्रोक्सीमेट प्राइस 90,000 रुपीज आती है, जहां पे आपकी 10 एप्लीकेशन होंगी TU9 में, एक्सक्लूसिव प्योर सिंपल TU9 यूनिवर्सिटीज। अगर आपको वो भी नहीं करना है, या तो आप TU9 के लिए नहीं हो यार, मेरे को TU9 नहीं करना है, आप तो मेरे को कोई भी है ना सस्ती सी पब्लिक यूनिवर्सिटी ला जहाँ पैसे नहीं लगेंगे, आप मेरा 65 वाला पैकेज ले लीजिए, मैं आपको वहां करा के दे दूंगा, गारंटी के साथ करा दूंगा। मैंने आपको टेस्टिमोनियल सुनवाई है, दैट्स हाउ वी वर्क। And everybody was talking about Dhananjay sir and Jitu sir. Dhananjay is here with me tonight. He's an excellent guy. He's an excellent master on Germany. तो गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके एडमिशन हम नहीं ला पाए। सिंपल प्लेन वनीला पैकेज लीजिए, उसमें भी बहुत सारे, उस 65 पे भी आपको ये 15% का डिस्काउंट एप्लीकेबल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपकी ओवरऑल प्राइस कितनी नीचे आ गई फॉर टेकिंग द सर्विसेज फ्रॉम अस। और वो सिर्फ आप पॉसिबल है कि आप आज ये अपना फोन उठाएं, QR कोड है ये, इसको स्कैन करें, UPI से इमीडिएट 2,000 रुपीज का पेमेंट, then this discount is possible, then discount is applicable। अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपको स्टेप लेना है, अब आपको आगे बढ़ना है, and as I said, ये जर्नी 9 से 12 महीने की है, तो अगर आप अभी सोच ही रहे हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप सोचते रह जाएंगे और आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किस तरफ आगे जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। विशाल, ये जो 15% डिस्काउंट है, ये ऑलरेडी लग के 2,70,000 हुआ है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो है वो 3,07,000 है, उस पर 15% डिस्काउंट करने के बाद ये 2,70,000 प्राइस आती है। In 90,000 package, Tarun, everything is getting covered, starting from the pre-application to application and post-application. Let me just bring that slide for you to have a quick understanding what is being covered into 90,000 के package में। ये देखिए, ये वाली स्लाइड है 90,000 के पैकेज में आपकी प्री एप्लीकेशन यानी कि प्रोफाइल एंड गोल क्लैरिटीज के ऊपर मैंने बहुत एलेबोरेट बात करी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, सारा डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं, आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं हम, आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, और आपके एप्लीकेशन के साथ क्योंकि 10 एप्लीकेशन हो रही हैं तो मिनिमम 2 to 3 गारंटेड एडमिशन हैं, जो आपको पेपर पेन में, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आता है कि हम इतने गारंटी एडमिशन आपको ला के देंगे। फिर उसके बाद पोस्ट एप्लीकेशन आपका पूरा वीजा गाइडेंस है, आपका लोन गाइडेंस है, आपका ट्रेवल लॉजिस्टिक्स है, एकोमोडेशन है, 2 ईयर पोस्ट असिस्टेंस है। हमारे बच्चे जो गए हैं वो आज भी हमसे CV अपडेट करा रहे हैं, आज भी हमसे असिस्टेंस ले रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पीली गिविंग देम ऑल दोस असिस्टेंस एंड सर्विसेज, क्योंकि ये पार्ट है हमारा पोस्ट एडमिशन असिस्टेंस का। 2 साल तक हम आपके साथ रहते हैं, जो कि आपको कोई और एजेंसी नहीं प्रोवाइड करती। तो दिस इज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस पैकेज फॉर एक्सक्लूसिव फॉर TU9 यूनिवर्सिटीज। तो अगर आपके प्रोफाइल में वहां तक है जो हमने TU9 के लिए बात करी है, लेट अस टॉक अबाउट दिस पैकेज। अट्रैक्टिव डिस्काउंट मैंने 15% आपके लिए बिल्ड कर ही दिया है, इसमें देखेंगे हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा इसमें काम होता है और डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग होती है जो हमें करनी है। तो जो ये बोनस मैंने आपके लिए अनाउंस करे हैं, ये बोनस पाने का सिंपल तरीका है, आप मुझे ईमेल भेजेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे माय बोनस प्लीज फ्रॉम टुनाइट, आज की डेट डाल के, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके ईमेल पे टुमारो आपको ये तीनों बोनस डिलीवर हो जाएं, इंक्लूडिंग पीपल हु हैव डन D6 फॉर मी, 101 कॉल बुकिंग एक्सक्लूसिवली, talking like this and getting all your profile evaluation, profiling doubts clear। अगर आप प्रोफाइल कॉल पे आने के बाद कहते हैं कि सर आप मुझे वो डिस्काउंट दे दो 15% जो आप रात को दे रहे थे, वो नहीं मिलेगा। वो डिस्काउंट पाने का तरीका सिंपल सा है कि आप ये कोड स्कैन कीजिए और अभी बुक कर लीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको मैंने जो इतना आपको स्टेप बाय प्रोसीजर्स और आपको जो टिप्स दी हैं, अगर आपको लगता है इसमें वैल्यू है, इसमें कोई बात है, तो 2,000 रुपए तो एक रात का डिनर होता है किसी का भी, आप कभी भी कहीं भी जाके आराम से खर्च कर सकते हो, ओवर नाइट एंड इवनिंग कॉस्ट है। व्हाई नॉट स्पेंड इट ऑन योर फ्यूचर, व्हाई नॉट स्पेंड इट ऑन योर फ्यूचर एंड लॉक दैट डिस्काउंट प्राइस।
and then take an advantage of furthering the discussion, because after this you still get like 4 weeks to complete the registration formalities. और वो 4 weeks में आप registration process complete नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन 4 week में आपका इतना काम हम कर देंगे that you will still see the value of 2,000 rupees which you have paid us tonight. So take that advantage, my dear friends. Just a matter of you picking this phone, scanning this code, and sending and locking your discount. While you are still thinking on locking in the discount, I am just waiting here to check if there are any questions. Any questions, my dear friends, ladies and gentlemen? Last few minutes left for the session tonight. I hope all of your questions has been answered by my expert team, Dhananjay and Alpana and Mayuri. All are here tonight. They are expert counselors. And I hope your questions have been well taken care. Reach out to us, send us an email for any evaluation you need, for any possibilities you need. डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, डिस्काउंट्स आज रात को ही है और ये 15% है जो मैक्सिमम है जो हम देते हैं. तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि हम तो पीछे से जाके डिस्काउंट ले लेंगे, तो ये नहीं मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है. So might as well just book it right now and make it available for your next 4 weeks and let's start the journey. That's what I could say. Any more questions, my dear friends? Is there anyone who is locking in the price right now? Is there anyone who can take a decision? Is there anyone who think that I am an action taker? I'm just not a listener. I'm an action taker and I mean business by spending my 90 minutes tonight at this session. What I meant is business. And I really want to take this up. So who is that lucky one who want to take this up tonight? Let's see if you all are action takers or you are just mere spectators here tonight collecting information, which is totally fine because that's what we do. And I'm happy that at least you would have gained some sense of knowledge regarding these TU9 possibilities and your overall cost which you need to plan if you really target TU9 universities. Totally fine with us. अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ बिफोर आई कॉल इट ऑफ. कितने लोगों को लेट्स से अभी अपने पेरेंट्स से बात करनी है इवन टू लॉक दिस डिस्काउंट? कितने लोगों को पेरेंट्स का फोन लाना है ये स्कैन करने के लिए? Give me an answer here and then I will make an offer. Let's see if there is somebody who is still waiting कि हाँ मेरे को अभी सर बात करनी है, मेरे को पता करना है, मेरे को पूछना है, मेरे को कुछ समय दे दिए so that I can quickly get this done and then lock in the discount. Let me see if there are anyone here. Okay, then I guess nobody needs it. So that's fine. That's what the offer stays. And that's where the time, the moment I call this webinar off, the discount is off the table. And then you can come down and start discussing and letting us know whether you want to take this up or not in the future. It's totally fine. Yeah. So this brings me to an end of yet another interesting session on TU9 applications or study opportunities in Germany. My next session is going to be post Diwali, and that too is an interesting one. And we're talking quite a lot on another aspect of German education again, because this entire month is again dedicated to Germany. But do not think that ये जो discount आज दिया है और ये package आज था, ये अगले webinar में भी valid होगा. You never know. So when it is there, you should seize that opportunity when it is there.
Okay. Now, if there are no more questions, then I must say thank you so much for attending this session tonight. It was lovely to have you all. The one who have sent me an email will receive their bonuses. And have a great time, have a great holiday period. Just a couple of days before Diwali, but I'm sure everything is super hectic now. Everybody is rushing home, checking on their flights, the travel, the shopping, the firecrackers and everything. Above all, looking forward to have a good time with family and friends. I wish you the best. I wish you the same. Have a fantastic Diwali. Have a fantastic time with your family and friends. And I wish you all the very best in your study abroad journey as you embark to your next journey, next education success, next education journey abroad. From my side, from Team EU Gateway, thank you everyone. Thank you Dhananjay, Alpana, and everybody else who has pitched in tonight as our co-host and actively participated in helping the students to make this session even more, let's say, dialogue oriented, and hope that we have added some value to your overall journey tonight. Thank you so much and have a great time ahead.